present subjunctives. So the example will look like, first example, I would rather that you call me tomorrow. Simple. I prefer you call me tomorrow rather me I do it. Second, we would rather that he take this train. So that's fine. You're not comfortable taking the train. You would like someone else to take the one. So that's fine. So just you have two subjects. SMA would rather will not be just stay would rather. It will be would rather that. Again followed by a simple form of verb. जब आपके पास present tense हो और आपके पास दो subjects हो. इसी तरीके से अभी तक अगर आपने प्रेजेंट टेंस में कॉन्ट्ररी टू फैक्ट बात करनी है, अगेन इसमें आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन यू आर सेइंग समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू. अभी तक जो बात हो रही थी दैट वाज अ स्ट्रेट स्टेटमेंट, प्रेफरेंस थी, कंपैरिजन था, दैट्स इट. लेकिन अगर आपने ऐसी स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है जो कि कॉन्ट्ररी टू रियल हो, which is also known as contrary to fact. So how to construct those structure sentence? So this will be first subject followed by would rather that. That will be followed by second subject and verb in the simple past tense. जब आप simple past tense को mention कर रहे हैं, because rest of the structure is same, so that means you are saying something which is contrary to what is on the ground. इसको example से समझते हैं. Henry would rather that his girlfriend worked, again simple past tense, in the same department as he does. So how to infer the contrary meanings? इसका मतलब है उसकी कि जो हेनरी की गर्लफ्रेंड है, she does not work in the same department. So it's just what you are saying, you don't mean it. What you say, you are saying lying. What you are saying is not true on the ground reality. So would rather that का मतलब with two subjects followed by verb in the simple past tense कि आप जो इस वक्त present की बात करें that is not true. ये contrary to fact है but in present tense. एक और example से इसको समझते हैं. Jane would rather that it were winter now. So it's actually not winter now. It's actually not winter now. अब हम जो बात कर रहे हैं इसमें हमने पहले बात कर ली कि प्रेजेंट टेंस में अगर आप कॉन्ट्री टू फैक्ट बात करें तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. नाउ वील टॉक अबाउट कि अगर आप वुड रादर को इस्तेमाल करें हैविंग टू सब्जेक्ट्स एंड यू आर सेइंग समथिंग कॉन्ट्री टू फैक्ट बट द टाइम इज पास्ट, तो पास्ट टाइम कॉन्ट्री फैक्ट को हम कैसे मेंशन करेंगे, हम उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. नो बिग डिफरेंस, इट्स जस्ट यू हैव फर्स्ट सब्जेक्ट फॉलोड बाय वुड